तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। Good evening, sir. Good evening, Aditya. Please go ahead, ask your question. Sir, I have a doubt regarding the GP. And in one of my SSBs, I faced a situation where a person was injured in an accident. So, after giving some information, this person had just felt unconscious. So, in the GP map, also that it was not mentioned that there was no, it was not mentioned there is any PHC or hospital in that particular map. But there is an uh, town which is considered to be the village or the district headquarters, but it is outside that map. It's approximately 10 kilometers away. So, what my group came to a consensus that they will go take this injured man to a public health center in a nearby village. This was assumed. It was not actually said by the GPO, but our group assumed it. So, is it right to assume that there is a public health center in a village, or I am in an opinion that that person should have taken to the district headquarters where it is sure that there is an hospital? So, I'd like to know, is it right to assume whether there is a PHC in the village? See, thing is that these kind of queries do arise in group planning exercises, and these things arise primarily because the exercises are not very deliberately set. I mean, there is ambiguity. They are not very well laid out exercises. That's a fact of whatever this group planning exercises that I have seen. So, in reality, what would happen is once you are in that location and you face this incident of a person being injured and all that, from locals available in the vicinity, you would be able to get the correct information, whether, some health center is there, somebody, nursing assistant is there with medical facilities and all that, you would know beforehand, before you start moving. So in reality, this query would not be, uncertainty would not be there. You will be fairly clear. So based on such realities of, practical life, somebody making an assumption that there is a health center there and some nursing assistant would be there to provide nursing help to this injured person would not be a wrong assumption. And so taking him first to the health center, which is in proximity, rather than straight going to the hospital, which is further away, has merit. Because the earlier the treatment, the better it is, So that is the logic, Aditya. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. Yes, Rajan. Jai Hind, sir. Am I audible? Jai Hind, Rajan, you are very much audible. Yes, sir. I have been to SSB 2 times. Sir, both time SSC tech entry. And sir, both times, sir, I performed well in OIR. And the story which I made was very much logical. And it was, most of the people wanted that to be the common story. But sir, Good. then also, both of the times I did not got screened in. And sir, this time what happened in Bhopal, SSB Bhopal, 28 SSB Bhopal, that one of the guy who did not even speak in the group discussion, he was screened in. Rajan, we, as a rule, I do not get involved in a discussion about somebody else who got screened in for whatever reasons. So let's leave that out totally. Let No, us sir, talk because, about your case. No, leave sir, it. I'm telling you, it will not make sense. Okay, let me explain. I do not have a video recording of what exactly transpired. Fine. yes, sir. And we don't have that person to interrogate here in front of us. Yes, sir. हाँ? Actually, तो sir, it both will the yes. चलो ठीक है आपके होंगे I will take it as your version of it, right?
Sir, what I would meant to say. deep. Okay. Okay. देखो ऐसा है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन माय साइड ऑफ इट। Okay, sir. आपने जिंदगी में कितनी स्क्रीनिंग अटेंड की हैं? Only two. ओनली 2। मैंने कितनी अटेंड की होंगी? More than 2000. मतलब एक दिन में ही एक एक कितने बैचेस हो जाते हैं? Around sir 20,000. More than 20,000. हर चौथे दिन एक बैच आ जाता है। Yes, sir. उन सब की करता रहा हूँ। 2 साल में कितनी करनी लगा लो आप। तो आई हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस। मैं देख ही रहा हूँ क्या हो रहा है, स्क्रीन इन स्क्रीन आउट कैसे हो रहे हैं लोग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज इन द फिश मार्केट एक्चुअली द आप होल सुनो, कंडीशन वाज अ फिश। आप नहीं, पहले हम एक बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरा सवाल भी ले लेंगे। वी आर टॉकिंग वन ऑन वन। फिर अर्जेंसी नहीं, कोई टाइम का प्रेशर नहीं। नो सर, नो सर। यस देखिए इत्मीनान से मैं आपको समझाऊं। तो बच्चे देखिए, क्या आप एसएससी टेक एंट्री में गए थे? यस सर। एसएससी टेक एंट्री में मेरे आप वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें बताया हुआ है कि यस सर, इसमें देखा जो हुआ। है गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जहां 200-250 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप 30 से नीचे लोग स्क्रीन इन कर रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन। दैट इज फर्स्ट थिंग। Second is, you are saying that your OIR performance was good. I presume it was well above 80%. यस सर। Fine, so that is okay. अब आपने स्टोरी सेंसिबल बनाई which was relating well to the picture, लोगों ने अप्रूव भी किया, तो that means it had the approval. In normal course, and you are nominated to narrate the story by the group. नो सर, इन द बोथ ऑफ द टाइम सर वी डिड नॉट कम टू कॉमन कंक्लूजन ओनली। अच्छा, you did not come to. Okay, नहीं, okay. both of the times because of the fish market situation. Understood. But you felt that the story which you had made, or which towards which you were guiding the group, the consensus was around that story only. Yes sir. हाँ, तो ठीक है, and your contribution was there towards the making of the common story. So sir, I feel like should I modify some, था कि make नहीं? some changes? था कि नहीं था आपका contribution towards the making of the common story? हाँ सर, majorly most of the parts था। most of the time. आपने हमारा वीडियो देखा हुआ है स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में? Yes sir, most of the videos देखे हुए हैं सर आपने। देखा नहीं, स्क्रीनिंग प्रोसेस वाला देखा हुआ हाँ है? सर, देखा हुआ है। आपने जो उसमें मेथोडोलॉजी बताई है वो फॉलो की थी? यस सर, वही फॉलो की थी। स्केर्सिटी माइंडसेट वगैरह से नहीं रहे थे आप? नो सर, नो सर। तो देखिए, आपने कुछ अपनी टैक्टिक्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने काम अपना सही किया है। आप अपना भरोसा रखिए एंड रिजल्ट विल कम। ओके सर। एंड दिस द एडवाइस जो मैं आपको दे रहा हूं ना, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स है आजकल की डेट में, जो मैं देखता हूं इन द सोसाइटी, वो भी आपको यही एडवाइस देता है। और दैट इज, यू सी, कि उनका रिजल्ट बेस्ट है। चेन्नई सुपर किंग इज नॉट द बेस्ट टीम। यस सर। इट इज नॉट द बेस्ट टीम। प्लेयर बाय प्लेयर आप देखो तो ऐसे नहीं है। आई एम श्योर हार्दिक पांड्या टीम हैड बेटर प्लेयर्स, but they have the self-belief and they continue believing in the process and do the things what is in their control. तो आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं उन पे बच्चे फोकस रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। आज नहीं तो कल बात बनेगी। यस सर। यस सर, दिस जब टाइम आप आई हैव काम, क्लियर्ड। हाँ, आप काम जब ठीक कर रहे हैं, तब सेल्फ डाउट्स लाना बहुत गड़बड़ वाली बात है। ओके सर। हाँ, यू आर डूइंग द राइट थिंग, जस्ट स्टिक टू इट, थिंग्स विल वर्क आउट। ओके सर, थैंक यू सर। Welcome, Thank beta. you, God bless. Most thank you sir, welcome. and your videos support a lot sir. Most welcome, beta. I am so happy. And यहाँ पर आके जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आके यहाँ एक्नॉलेज करना एक सेशन अटेंड करके कि For बात sure पूरी sir. भी बन गई। Okay, thank you ठीक sir. है, हाँ, हमारी गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना कोई कंपल्शन नहीं है। इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, यू कैन क्लियर ऑन योर ओन। दैट इज व्हाट इट इज। Thank you sir. Jai Hind. वेलकम, जय हिंद। नाउ नेक्स्ट इज निखिल, बेटा, गो अहेड। Jai Hind, sir. Actually, Jai sir, Hind. I have a doubt regarding, sir, my qualification.
when I went to the SSB for the CDS entry at 2 SSB Mysore, at that time what happened, sir, the assessors took me to the tax like I have done BTech, and now I totally have switched on to the non-tech sector, that and currently I am preparing for the CAPF and the civil services and all. So they asked me about my other options, and at that time when I said to them that these are my second options and all, then they dragged me on the question that despite being a BTech and despite pursuing engineering, why are you moving on to this sector where there is no such technical expertise involved, and it would be waste of your technical skills. And even said I was not able to answer the technical subject related questions properly, as it has been around a year I have not studied the technical subjects. Could you please, sir, guide me that how can I handle those questions, uh, because I have completely switched to the non-technical background? Okay. First thing is, Nikhil, I do not buy your arguments that since it has been 1 year that you finished your engineering and now you have shifted to a different line, you should not be able to answer questions related to your technical knowledge. मुझे फौज छोड़े 2011 हो गई है, मुझसे आप इन्फेंट्री के सवाल पूछे, मैं आज भी बता दूंगा, और वो इसलिए बता दूंगा क्योंकि मैंने अपना काम सिंसियरली किया। Yes, sir. तो ये जो आपकी दलील है ये बुलशिट है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। Yes, sir. एक तो इस दलील के चक्कर में मत पड़ो, ये दलील देना ही आपकी कमजोरी दर्शाती है। प्लीज डोंट ट्राई टू डू इट। आई होप इट इज क्लियर दिस पॉइंट। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट कि आप काम क्या करते हैं। द नेचर ऑफ वर्क यू आर डूइंग इज what the society provides you. Anil Kumble is also an engineer, and जो फास्ट बॉलर था हमारा श्रीकांत, वो भी जो था इंजीनियर था। तो फिर तो अनिल कुंबले को तो बॉलर नहीं होना चाहिए था इंडिया के लिए, उसको तो अपनी इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी। Yes, isn't it? sir. Yes. As per the logic given to you by the interviewing officer. So don't fall in that trap. He is just trying to ask कि क्या है भाई, आपको जो काम मिला वही क्यों करोगे ना? Yes, sir. ठीक है ना? So that is what it is. So do not be defensive on that. और सीधी सीधी बात बोलो कि भाई ये मुझे काम मिल रहा था, ये इसलिए कर रहा हूँ। आज की डेट में जो है कितने ही 90% of mechanical engineers they work in the IT sector. Is that not Yes, a sir. fact? Yes, sir. It's a fact. तो वो है, तो उनकी जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन तो मोटी मोटी यही है कि उन्हें काम वो मिल रहा था इसलिए वहां कर रहे हैं। Yes, sir. अब जो है कितने ही कॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो देश छोड़ के विदेश में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? Yes, sir. अब उनसे तुम कहोगे तुम्हारी देशभक्ति कहाँ गई है, कहाँ गई है? तो सिंपल बात है भाई, रोजी रोटी कमानी है, वहां बेटर है, यू नो, you know, future is better, so that's why they've gone there. Simple logic. So, sir, I can mean simply accept that I have not studied properly the technical part or the during graduation, so I'm not good at the technical subjects. आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, सच्चाई तो यही है। Yes, sir. तो एक्सेप्ट करना, will it be better or it will be worse? Yes, sir. It would be better. It should be better. He will know the truth in any case. Yes, sir. So that's Thank what's good. आप एक और काम करिएगा, जी सर। हमारी बुक लीजिए, ई बुक लीजिए या हार्ड कॉपी लीजिए। सर आई हैव गॉन थ्रू योर बुक। पढ़ी है तो बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो तुमने अजय सिंह राजपुरोहित की कहानी पढ़ी है? सर ऑलमोस्ट पढ़े हुए काफी दिन हो गए, लास्ट टाइम एसएसबी टाइप पढ़ी थी। कोई ना, तुम्हारे अपने सब्जेक्ट भी चीजें ध्यान में नहीं रही, ये भी ध्यान में नहीं रही चीजें। आप अजय सिंह राजपुरोहित की कहानी पढ़िए। उसने इंजीनियरिंग करने में 6 साल लिए थे और वो मैकेनिकल इंजीनियर था, और उसकी नॉलेज उसके पास नहीं है। ही एक्सेप्टेड एंड ही इज एन ऑफिसर टुडे। समझे? ओके सर।
तो गोली देने का अप्रोच इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, समझा? Okay, sir. ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस। या आशीष? Jai Hind, sir. जय हिंद आशीष। So, sir, I have a small doubt. So, in my last SSB, आप ऐसा करो, there is आपका स्मॉल डाउट हम बाद में लेते हैं। आप ये बताइए आपके व्यूज क्या हैं, ये जो विनेश फोगाट और साक्षी जो हैं धरने पे बैठी हुई हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ, और जो सरकार कर रही है, आपका व्यू क्या है इस बारे में? सर मेरा व्यू सरकार जो कर रही है उसके अपोजिट था ये सरकार कि पूरे मतलब बिल्डरों की जब सरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट Is this सरकार not of obviously sir total supreme court shameless people? yes sir like sir what happened like supreme court the intervention by the supreme court happened only then the Delhi police registered FIR Yes. and also he's a POXO accused and even though he is not arrested पोस्ट अक्यूज होता है तो वो तो अरेस्ट हो जाना चाहिए था उसके बाद उसको इनोसेंट अपना प्रूव करना है So you realize that what is going on by Delhi police, our sports administration, this committees to investigate, all bloody eyewash, bullshit, shameless government we have today. I wanted on this forum that this thing should go on record. That's why I asked you this question. Fine, Ashish, please go and ask your question. Video भी खोल के रखो अपना यार. so there is no electricity sir that is why अच्छा, no issues. हाँ, सवाल पूछिए छोटा सा. so in that GP there are 3 major problems and 1 minor problem so the minor problem was there is a monkey who snatched a bag from a local shopkeeper and went into the jungle which was around 3 to 4 kilometers far from the current position then I told the group member that we should focus on the 3 major problems it is not something which we should focus on because first of all the monkey went into the jungle how can we find a monkey into the jungle then group member said that we will find it and we will give him some kind of fruit banana and we will throw these fruits and throw back the bag and we will come back so even though I am continuously saying that we should not focus it will waste of time so did I did some wrong sir Ashish, what you did is absolutely right. And what your statements, they remind me of one very famous Supreme Court judge we had in India by the name of Karju. And Karju said that 90% of Indians are idiots. Right? So a very high percentage happen to land up in your group. So because they are insane, it doesn't mean that you should also get influenced by their insanity and start believing that what they're saying is correct. yes sir Yeah, you are absolutely right that they were being stupid. That's all. yes sir so one more doubt sir sir Please go ahead. when they ask about like what is your plan B if you are not selected into the armed forces and keep consisting that you are suppose you are not medically fit then what will so even though sir should we rely on now sir I have sure and I will make sure that I will get into the forces and I'm medically properly fit so I currently I'm not thinking about a plan B or something like that. I'm only focused towards the joining the armed forces. देखिए आशीष क्या है, in reality
it would be good for you to change your outlook. The reason is Yes, sir. that medical aspects often can be such that they are not in your control. And if you have a medical condition which renders you unfit for selection, you can't change it. My son Yes, sir. got medically examined. He had taken part in this mission, Army Desh Ke Rakshak. And they found two reasons for permanent rejection. One thing had to do with the shape of his toe, and one was the issue of sweaty palms. And to the best of my knowledge, he could not have changed both of these. Fine. These are just Yes, sir. examples I am giving. So it would be better that you do have an alternative plan. Fine. ये तो रही आपको क्या करना चाहिए सलाह. As far as your answering is concerned, you should answer openly whatever is your genuine answer. And as on today, I realize that your genuine answer is that you have not thought of a plan B and you are convinced that you will make it in the defense forces, then you should state as much. And if the interviewing officer Yes, sir. says बेवकूफ हो and ऐसा नहीं होना चाहिए and all that, well, that is his perception. You are going Yes, sir. to live your life as per your perception and not as per the perception of the interviewing officer. Right, sir. That's it. Answer him accordingly. Simple. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Yes, Ashutosh. Jai Hind, sir. First of all, Jai thank you Hind. so much for being available here, guiding us. You're such an Most welcome, Ashutosh. Most welcome. yes, sir. I have a doubt, sir. I have been through the process 3 times till conference, and recently I came back on the 2nd of this month from first SSB, Dehradun. So, number of doubts are being raised through my mind, sir. And the first of the doubt is that I am not able to make it out myself that where I am lagging. So I'm in a dilemma, sir. What should I do? In whole of my life, I have never taken any coaching, even for my academics, and I wanted to carry this on forward. But now I am in dilemma, sir. Please guide me. What should I do right now? देखो dilemma में अगर आ ही गए हो तो फिर तो हमारे पास आ जाओ. ठीक है ना? अदरवाइज क्या है, अगर यार देखो कोई छुपी हुई चीजें हैं नहीं, और मैं भी कोई ऐसे बहुत ही बहुत ही अंदर की बात खुफिया निकाल नहीं दूंगा. I'm telling you now in a very open forum. So I am an ordinary person and I will identify क्या areas for improvement है, and we will make a plan to work hard to improve systematically on all those issues. Fine. ये हम करने वाले हैं. अगर आपको मोटा मोटा खुद ही आइडिया है कि ये चीजें हैं और इम्प्रूव जो की जा सकती हैं, तो उन्हें आप करिए तो भी बात बन जाएगी. हमारे पास क्या होता है, एडवांटेज ये हो जाती है बेटा, एक ये है कि अब एक्सपर्ट वर्ड से मैं बहुत घबराता हूँ, बट यू कैन कंसिडर मी एटलीस्ट एन एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस फील्ड ऑफ सिलेक्शन सिस्टम, क्योंकि मैं इसमें रहा हुआ हूँ. तो मैं आपको असेस करके बताऊंगा कि भाई ये चीजें जो हैं ये इम्प्रूव और करने की जरूरत है, और फिर हम प्लान बना के उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर हमारे पास जो है बड़ा अच्छा सपोर्ट बेस हमारे पास हो जाती है. अंग्रेजी में आपको योगिता मैडम गाइड करती रह सकती हैं कंसिस्टेंटली, ठीक. और हमारी ग्रुप एक्टिविटीज हैं वो आपको इनके जो है मेंटल फ्रेम में बेटर डाल देती हैं. To go through these things, PPDT, group planning exercise, GDs, lecturate वगैरह का आपको regular practice मिलता रहता. So some of these things are there which are difficult to get elsewhere, to the best of my knowledge. So
ये है चीजें, डिसीजन तो आपको लेना है। सर दैट्स व्हाई आई हैव केम हियर सर। स्पेशली जो मेरा मेजर एरिया लग रहा है, मैं वैसे तो जीटीओ टास्क वगैरह अगर मेरे सामने कोई पिक्चर वगैरह मैं देखता हूँ तो जनरली दूसरों के कमांड टास्क में भी जाता हूँ, तब भी मुझे फुल आइडिया होता है। लेकिन पीजीटी वगैरह शुरू होता है तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे साथी हैं वो काम मुझसे पहले कर रहे हैं। दैट इज वन। अंडरस्टूड। तो ऐसा है आशुतोष, इसकी चिंता मत करो। किसने पहले कर लिया स्टार्टिंग ब्लॉक से, कौन पहले निकल के आगे वगैरह ना, दैट डोंट गेट बॉदर। जिंदगी की दौड़ बहुत लंबी होती है। आपका 2 दिन का प्रोसेस है जीटीओ टास्क का, आपको खुद क्लियरली पता चल जाता है कौन कितने पानी में। तो when you can assess this very clearly, you think the GTO will not be able to do that. So don't get into the scarcity mindset. Be an effective team member. Make sure that the team is performing well and you are contributing to the best of your abilities. It does not matter कि गोल किसने फाइनली मारा था, सपोर्ट तो पूरी टीम करती है। ठीक, ये माइंडसेट रखिए, इससे मत घबरा जाइए। अगर आपके समझ में आ रही है चीजें, इफ यू कैन सॉल्व अप टू पीजीटी 4 ऑन योर ओन, इफ यू आर लेफ्ट अलोन, यस सर। डोंट गेट बॉदर्ड। ये इशू आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोजेक्ट करना एंड ऑल दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। आपकी बात बच्चे सर अब अगर मेरे पास कमांड टास्क में जैसे आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो इस चीज को मैं कैसे इम्प्रूव करता हूँ, थोड़ा इस चीज के लिए मुझे गाइड कीजिए। इस चीज का सोल्यूशन आपके पास खुद ही है। आप मेरे से पूछ रहे हैं, सोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर विद यू। आपने you yourself said that when you go as an to assist someone else in his command task, you are very clear that how it can be done. यस But सर। when it comes to your own command task, you are not getting the ideas. That means you are taking undue pressure to get selected. And because of that, you are not able to perform to the 100% of your ability. That's the thing. यस सर। ये तो आपको पता था खुद बात है। यस सर। आप तो मेरे से क्या पूछ रहे हो, खुद ही पता है। Sir, there is a doubt regarding if I am joining the academy, No Frills Academy. So if through the online batch, so how the GTO section, especially the those structural functions will be given to me? What is the process for that? हम इन सब चीजों की कराते हैं। हमारे पास एक जीटीओ सेल्फ स्टाइल जीटीओ है हमारे पास खुद, वन ऑफ द स्टूडेंट्स मनिंदर हु नोज अबाउट जीटीओ टास्क मच बेटर देन मी। क्योंकि मैं तो एक बार में रिकमेंड हो गया था। दैट इज ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव जीटीओ टास्क। या बाकी जब मैं डिप्टी प्रेसिडेंट था तो आई टू समटाइम्स गो एंड सुपरवाइज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो योगिता, जस्ट प्लीज एक्सप्लेन टू आशुतोष हाउ वी विल बी एबल टू गाइड यू नो Ashutosh as far as the GTO tasks are concerned through our specialist Maninder. What Maninder does is he brings you PPTs. In PPTs, he will arrange those 3D figures and ये इसको ये ऐसे टाइप कर सकते हैं, इसको रूप ऐसे टाइप कर सकते हैं, and they all have discussion for at least 1 hour or so every week. आज भी हुआ था। तो दे डिस्कस और उसके आइडियाज के लिए वो वीडियो ऑन करके स्केल लेस लेके खुद बताता है ऐसे। Okay, so in whole process approximately on a normal figure how many structures will be shown to us? Just curious. नॉर्मली ऑल पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी सारे आपको एक एक गो थ्रू अलोंग विथ रूल्स सब बताया जाएगा। Okay. आशुतोष, बॉटम लाइन ये है कि हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स श्रेयम, ऋतु रानी फर्स्ट अटेम्प्ट में रेकमेंड हुए हैं। तो Yes, उन्होंने तो देखे नहीं था जीटीओ टास्क, तो हमारी शिक्षा से हो गए हैं रेकमेंड। ठीक है ना। मैं खुद भी ऐसे ही हुआ था, मैंने तो देखे भी नहीं थे। तो ये कष्ट वाली चीज नहीं है। कष्ट आपके दिमाग में है, वहां से निकाल दीजिए। yes sir. ठीक है ना।
So even this time, just 4 days back, when interviewer asked me, how did you prepare? I told him about the book. That's Colonel Nehru, sir. The practical guide to become an officer. He smiled and noted that and asked me how it helped you. So I told him that it asked me just to be original. So the interview went well for me, but I thought the problem was outside. I have to figure it out, and I hope Broadly, so. I have been able to get a hint, and that is you are taking undue pressure. Yes, sir. Okay, don't take that pressure because that pressure will work against you. It's as simple as that. Okay? Yes, sir. Okay, Ashutosh, take care. God bless. Sir, thank you for your time, sir. I'll join you Bye. soon. Bye. Thank you. Most Jai Hind, sir. welcome. Most welcome. Jai Hind. Dayanand. Good evening, sir. Good Sir, I wanted to join evening. No Frills Academy, sir. But the doubt which I'm having is that, sir, I am currently working in software engineer, so as a software engineer, sir. So the time feasibility I'm not getting, sir. Like my office timings will be at 12 p.m. to 9 p.m., sir. So at what time I should join? These activities will be provided for me. Dayanand, you see, we are practically all our students because you see, you may have some peculiar timings when you are going to be free. So there would invariably be some other students who are in a similar kind of a job profile that you are. And they would also be students of No Frills Academy. Right? Yes, sir. So आपका जो है इंटरसेक्शन जो है आपका जो बनाया जाएगा टाइमिंग्स का वो मिल मैच कर जाएगा. That is how it is going to be. Then, sir, like at what time I will get that time, sir, wherein I can attend those sessions? हमारा वो हो जाएगा आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है. We are able to cater for practically all our students' needs. तो वो इशू नहीं है, वो हो जाएगा. और बाकी आपका इंटरव्यू रहा, मेरे से इंटरेक्शन हुआ, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है क्योंकि हमारा बैच सिस्टम नहीं है ना बेटा. हाँ सर, We don't मैम have a batch system of guidance. We have one-on-one guidance. हाँ सर, मैम ने भी गाइड किया था कि बैच सिस्टम नहीं रहेगा, जहाँ पे आप हाँ. टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगा, पर मैम ने कहा था कि अगर से 10 के बाद, सुबह 10 के बाद से स्टार्ट ऐसे हो सकते हैं. तो अगर से 10 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो सर, तो मेरा ऑफिस का टाइमिंग फिर मैच नहीं होगा, फिर वहाँ पे मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा सेशंस. We will be able to. That like I said ना कि जैसी आपकी जॉब प्रोफाइल है कुछ और लोगों की भी तो होगी. और नो फ्रिल्स He will एकेडमी be available. ज्यादा It's not just 10:30 a.m. to Wednesday and Sunday Nehru sir will be there, but apart from that, let's say 8:30 a.m. हुआ, 4 p.m. हुआ, 5 p.m. हुआ, 9 p.m. हुआ, 8 p.m. हुआ, 9:30 p.m. हुआ, ऐसे भी एक्टिविटीज चलते हैं. दयानंद, अच्छा आप हमारे जॉइंट सेशन के बारे में कंसर्न थे, तो जॉइंट सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी और आप अपने ग्रुप कोऑर्डिनेटर के थ्रू अपने जो क्वेरी बात करें तब करें सेटल वीकली इंटरेक्शन. अच्छा सर, ठीक है ना. तो मतलब हमारे से ज्यादा फ्लेक्सिबल मेरे ख्याल से मिल नहीं सकता आपको कोई, जहाँ पर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. श्योर सर. या दैट्स व्हाट. थैंक यू सर. वेलकम. हाँ, रमना. Jain sir. जय हिंद रमना. Sir, myself Sipai Jain Ramana sir, present working in EMA sir. Good. Sir, I would like to apply for SEO 54 sir. I need some guidance about my preparation sir. I start physical psychology, but I abound of it. I want to know sir what I have to collect the information according to my traits and all like that.
आप हमारा सबसे पहले तो एक वीडियो देखिएगा सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के बारे में जो मैंने बनाया। मैं सर उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो वेबसाइट में डालता नहीं हूँ बिकॉज दैट वुड बी इनकरेक्ट। सर्विस एंट्री का सर बातचीत बनाना करेक्ट है। सर तो आपके ही एक खबर हो सकता है, तुम भी बहुत डांट खाओ अगर मेरे साथ एनरोल करो, क्योंकि जनरली मैंने देखा है सर्विस एंट्री वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो ये कोचिंग से इतने ज्यादा इल इफेक्टेड है कि उनका पहले दिमाग से कंट्रोल डिलीट बहुत ज्यादा डेटा करना पड़ता है, ठीक है ना। और सर ये आउट जो आपका है ना कि साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू चाबी है, तो ये अप्रोच ही गलत है। सिलेक्शन की चाबी आपकी कॉम्पिटेंस है, सर जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी नॉलेज है, जो आप रोजाना जिंदगी में कर रहे हो। Those are the most important things in your life which will get you selected. सर समझ रहा है रमना बेटा? सर गॉट इट हाँ, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए, सर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कई बार सेलेक्ट भी हुए हैं काफी सर्विस एंट्री वाले हमारे, लेकिन कई सर्विस एंट्री कैंडिडेट के साथ मैं खुद डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वो लोग जो थे किन्हीं वजहों की वजह से टाइम डिवोट नहीं कर पाए, सेशंस वगैरह नहीं कर पाए। मैंने उन्हें बोला कि भाई इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख के भेजो, ऐसे लिख के भेजो, वो चीजें नहीं कर पाए अपने नेचर ऑफ काम शाम और जो भी थी। ठीक, तो ये आप कर पाते हो तब बेनिफिट है, अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो फिर हम नो फ्रिल्स एकेडमी भी कुछ खास कर नहीं पाएगी ना। टाइम तो आपको डिवोट करना पड़ेगा ना इम्प्रूवमेंट के लिए, सर समझ रहे हो ना बेटा? सर गॉट इट सर हाँ, तो वो आप अगर करने के लिए तैयार है तो फिर आप आइए, प्लेटफॉर्म हमारा सूटेबल है एकदम। सर आपको असेस करके मैं बताऊंगा भाई ये इम्प्रूवमेंट की चीजें हैं, कैसे इम्प्रूव किया सर जा सकता है वो सलाह देंगे, और रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, और चाहिए क्या होता है, सर पर एफर्ट आपको करना पड़ेगा। सर आई एम रेडी टू डू दैट सर हाँ, रेडी भी हो, पर सर्कमस्टांसेस भी सही होने चाहिए। रेडी तो वो दूसरे बच्चे भी थे जो नहीं आप किसी वजह से कर पाए, नॉट दैट दे वर नॉट विलिंग। not like that sir they are also willing but I have like strongly decided to be I have to do means I want to leave तो बहुत something बढ़िया for है, what I want to फिर achieve बेटा आ जाओ, फिर आ जाओ। हाँ, क्योंकि जो जो शेख सोनी और जो जो हमारे पास लोग रेकमेंड हुए उन्होंने टाइम डिवोट किया, तभी इम्प्रूवमेंट हुआ उनका, और अच्छे से इम्प्रूव किया उन्होंने, तब सर बात बनी। तो आ जाओ फिर, okay ठीक है। sir ओके बेटा, गॉड ब्लेस, sir thank you sir jai hind sir वेलकम रमनाथ, जय हिंद। ये आईफोन किसी का आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, आईफोन लिखा हुआ है। Jan sir. जय हिंद। So actually, so sorry for this. Actually, I just joined this session. I mean, I joined in hurry, so that's why I didn't get a chance to change my नो name. प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ नो फ्रिल्स एकेडमी है, या फ्रिल्स में हम पढ़ते ही नहीं, बात होनी चाहिए आपसे मेरे बीच में, दैट इज ऑल। Sir, my name is Naik Hemant sir, ओके, गुड। and I'm also preparing for SCO 54 sir. ठीक, So my doubt is regarding a tag picture sir, and I discussed that with my OC also. So in that picture sir, so there were 5 characters sir, in which 4 were male and 1 was child. So they were playing cards, like they were sitting on a round table and playing cards, and one of them was smoking. So when I made a story, so somehow I mentioned about that smoking part. So my OC told me that if you are not mentioning about that smoking, then it is right, because you are mentioning that it is a kind of social gathering. And let's suppose if you are sitting in a social gathering and someone started giving you lecture that this is wrong, that is that, so somehow you are spoiling the environment.
So is it good that if we are clearly able to see that kind of thing, so we are to mention that thing, or is it okay, sir? देखिए, आपका आउटलुक बिल्कुल ठीक था हेमंत। सर आपने ये आइडेंटिफाई किया होगा शायद कि ये चीज खराब है, स्मोकिंग खराब है। ये तो उस पे लिखा होता है, स्टैट्यूटरी फॉलोइंग लिखी होती है, इट इज इंजूरियस टू। एंड जो आदमी स्मोक कर रहा है वो बाकियों को भी अपने स्मोकिंग से अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पैसिवली उनके पास भी जा रहा है। दिस इज अ फैक्ट। तो ये काम गलत है, इस कोई डाउट नहीं है। और शायद आपने ऐसे कहा होगा कि किसी ने उसको समझाया उनमें से, ग्रुप वालों में से, कि भाई ये काम करने अच्छी बात नहीं है, और उसको हेल्प आउट किया, जिससे कि वो अपनी आदत उसने छोड़ दी। ऐसी कुछ स्टोरी बनाई थी आपने? यस सर, यस सर। तो ये स्टोरी लाइन बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, लॉजिकल है, बिल्कुल ठीक है। प्लीज डोंट गेट वरीड। And one more picture, sir. It was a kind of bar scene, sir. Like that by visuals, it was clearly seen that it was a kind of bar, like pub type. So what kind of perception we have there, like because clearly you can say alcohol is also used to have some kind of. So I also made the same kind of like story on that, sir. So नहीं, आपने मुझे क्लियर नहीं किया कि उस बार का जो सीन दिखाया उसमें आपने स्टोरी क्या बनाई। I don't know. Actually, same, sir. I just made it like a type of like that. Some the main hero. So he was a police person, and so because the bars were illegally operated in that area, so he did something to get out of all these things. So I just made that type of story. Okay. I got your point. हेमंत, यहाँ पे आपकी स्टोरी ठीक नहीं है। मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि आपकी स्टोरी में आपने क्या किया है, आपने मेन कैरेक्टर पिक्चर में है ही नहीं, बाहर से कोई डाल दिया है, ऐसे किया ना? No, sir. Actually, no, I mean, characters were present there. There were a number of characters. So I choose one of them, and I mentioned that at that time he was in a civil dress. सिविल ड्रेस में तो किया क्या, वो उनको बंद कराने गया था बार को? Yes, yes, sir. Because that was illegal. देखो, this possibility is there. It cannot be denied. Sir. But in normal course, this is not a very likely situation. The most likely situation है कि जब दबंग में भी जब चुलबुल पांडे गया था और जब वो मुन्नी बदनाम हुई वाला डांस कर रहा था, तो वो गया था ऐसी जगह पे, तो वो उनको अरेस्ट करने नहीं गया था। गया था क्या अरेस्ट करने? No, sir. नहीं गया था ना। He had also gone to enjoy and let his hair down. Sir. Or not all bars, and you see all these, they have social sanction. Sir, भाई लीगल भी तो है ये चीजें। sir, sir. तो लीगली आप जो है, आप अगर आप एडल्ट हैं, you are, you know, can legally consume liquor and bar is also legal, licensed है, तो उसमें दारू पीना is not an unethical work. Sir. आई बात समझ में? Yeah, same thing my OC told. हाँ, तो यहाँ आपके जो थे, जिन्होंने आपके ओपी ऑफिसर ने एडवाइस किया, वो आई एग्री विद हिम। तो यहाँ पर स्टोरी अप्रोप्रिएट ये होती है कि इन्होंने कुछ अच्छा काम वाम किया था और सेलिब्रेट करने के लिए गए, दैट्स ओके। गेटिंग द पॉइंट? हेलो, हाँ हेमंत, डिड यू गेट माय पॉइंट? एम आई ऑडिबल, योगिता?
Yes, sir, you are. अच्छा अच्छा, तो उनका मेरे ख्याल से कनेक्शन में गड़बड़ हो गया है। हाँ, हेमंत, डिड यू गेट माय रजिस्टर माय पॉइंट? चलो, we'll get his confirmation later जब आ जाएंगे। हाँ, till then, Shivam, please go ahead, ask your question. जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक्चुअली मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स कुछ अच्छी नहीं है। जब मैं किसी अननोन के साथ इंग्लिश में बात करूँ तो मैं हेजिटेशन फील करता हूँ। अगर कोई नोन पर्सन है तो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे इसी चीज का डाउट था कि जरूरी है क्या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है वहाँ पे इंटरव्यू में? आपके देखिए, प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने से हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस मिलेगी ग्रुप एक्टिविटीज में, टू डू PPDT सेशंस, GD, लेक्चरेट, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एंड GTO टास्क का डिस्कशन करके हम लोग करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो आपकी GK, इंग्लिश and ability to communicate with people who are not known to you will definitely improve. और ये झटके से तो हो नहीं जाती है, आप करेंगे तो इम्प्रूव होगा। तो आपको हमारा प्रोग्राम काफी हेल्प करेगा, तो आप आ जाइए ना। हाउ टू ज्वाइन कोर्स? ज्वाइन करने का है, आप योगिता मैडम से बात करिए, वेबसाइट है हमारी, वहां से जाके यू कैन डू द एनरोलमेंट फॉर्मेलिटीज। Typing in my mobile number. या सर मैं अभी मतलब यहाँ पे तो नहीं रहता हूँ, कि आसपास तो नहीं रहता हूँ, मैं दूर रहता हूँ घर से भी। तो पहले मैं घर से भी दूर रहता हूँ, तो मैं कर तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं हॉस्टल लाइफ में हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? डज नॉट मैटर बेटा, आपकी लोकेशन से बच्चे फर्क नहीं पड़ता है कोई, क्योंकि हमारा ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम है, और आपकी लोकेशन चेंज भी होती रहे तो क्या फर्क पड़ता है, ऑनलाइन तो आप काम कर ही सकते हैं ना। यस सर। दैट इज व्हाट इट इज, समझा? ओके सर, थैंक यू सर। जय हिंद। वेलकम। जय हिंद शिवम। या Pranjoy. Good evening, sir. Am I audible? Yeah, Pranjoy, you are very much audible. So firstly, thank you so much for providing this opportunity to have a conversation with you. Most welcome, Pranjoy. Sir, I am right now preparing for the ND written exam, which is scheduled on 3rd of September. Okay. So my question to you is, since I am sir, very highly clear in the SSB in the first attempt. आपका वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो में। Sir, is it now clear? Let me turn off my video, sir. हाँ, it is clear now. Go ahead. Okay, sir. My question to you is, since I am preparing for the ND written exam, which is scheduled on 3rd of September, sir, and I am very highly motivated to clear both written and SSB in the first attempt. It's for written, but my question is, like, how can I prepare for SSB as well? I mean, like, how can I assure that I am putting efforts in this direction as well? Apart from written, I am doing something towards my personality. As there are n number of tests in the SSB, so I am very confused as to where to start from, sir. Pranjoy, actually, yes, I understand your situation of being confused, because confusion is being created tremendously by these websites and the information you get from the coaching academy. Absolutely. The first thing you can do is stop seeing these and understand. मतलब ये कोचिंग वाली वेबसाइट देर लाइक गोदी मीडिया ना। Yes, sir. तो मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की मिलेगी। आप अगर Pranjoy, simply if you are a competent student and your general awareness is also good and your physical fitness is also good, you will get selected. Because you see, at some point of time, there would have been defense aspirants who went for SSB and there were no coaching academies that had come up because nobody knew Absolutely, क्या sir. होने वाला है। So my father is also one of those. My father is also one of those. One of those only ना। तो भाई वो भी तो रेकमेंड हुए, वो उसका बेसिस क्या था रेकमेंड होने का?
Basis was that his overall competence was good enough. That's why he got selected. No. Yes, sir. So this fact has remained unchanged till now. Because if the selections system starts selecting people based on their knowledge of the selection process rather than their overall competence, that means the selection system is not doing the job properly. Absolutely, sir. So the selection system is doing a job properly. Have faith in that. Raise your overall competence and you'll get selected. As simple as that. Right, sir. ये एसएसबी की जानकारी जो है ये तो बेवकूफ बनाने का सौदा है. Yeah, right, sir. आपकी ओवरऑल कॉम्पिटेंस सही होनी चाहिए. Does your father agree with it or not? Definitely, sir. Yes. हाँ तो तेरी भी बात बन जाएगी. दिक्कत क्या है? Yes, sir. Sometimes I get bogged down when listening. As you mentioned कि भाई Google पे सारा कुछ available है कि everything ना. Yes, sir. हाँ तो वो तो है. अरे भाई आप ये देखो गूगल पे तो कितना ये भी कह रहे हैं ना कि चाइना ने इंट्रूजन किया ही नहीं. प्रधानमंत्री खुद कह रहा है. Yes, sir. तो जो है पूरा गोदी मीडिया बता रहा है कि ब्रिजभूषण कितना क्लीन आदमी है और अदानी ने कोई करप्शन किया ही नहीं. Yes, sir. तो डू यू बिलीव इट? Yes, sir. डू यू बिलीव कि अदानी ने करप्शन नहीं किया? Yes, sir. I absolutely believe it कि उसने किया है, sir. I mean, I believe it, sir. हाँ. एंड डू यू बिलीव कि ब्रिजभूषण बहुत स्वच्छ आदमी है? Yes, sir. But you see, na, there is so much of misinformation in his support. Yes, sir. Absolutely, sir. Yes, sir. So this is what it is. So this is sort of a Godi media confusion creation. Don't get. If you are a clear-headed guy, why should you get confused by such stuff? Yes, sir. Definitely, sir. बस बात बनेगी. आपकी क्यों नहीं बनेगी? फादर की बनी थी, आपकी बनी. सिलेक्शन सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है जैसे तब करता था. बिल्कुल, sir. Fine. Right, sir. Thank you so much, sir. Most welcome, Pranjoy. Yeah, Himanshu. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is regarding games and sports. Sir, last time I was conferenced out for NDA entry from Allahabad SSB. Sir, my question is that is games and sports necessary? Sir, because during my academics, I didn't have much opportunity from my school side and from my society side that I could pursue some games to some state level or national level. And sir, so is it necessary that I should mention in my PIQ some games and sports and learn its dimensions and all those things? Himanshu, this is absolute bullshit. You don't need to do any of these things. What you need to do is make yourself physically fit. That is about all. Right? And yes, sir. And, sir, actually, last time I happened to meet people. You can go, Himanshu, on our Instagram and you can read the story of Brigadier Sanjay. He was my junior in the battalion and he is presently the military attaché in Germany. Yes, sir. Right? So he was staying on a high floor building in Chennai and he joined NDA and he was never into any sports and all that. Physically fit tha, that's it. So second thing I would like to ask about hobbies and interests. Sir, like anything, there is nothing special like as such in hobbies and interests. Every good thing that is there, I like it. Sometimes I dance, I like sing, I like sketching. So there is no one specific thing as hobby and interest. You can leave this column as absolutely blank. There is just no problem. If Himanshu, you are overall competent, you will get selected. Nobody gets selected because his hobby was stamp collection, coin collection, and some XYZ stuff, right? First time, sir, we were trained to do so and we are compelled to do so. Sir, last time we were instructed that at least 2 sports are necessary for getting selected.
So I thought, sir, ki 2 is the least condition, so I should write 3. So I wrote 3. And at the last moment, I was reading all the dimensions, ball size, and everything there. And sir, ये शिक्षा किसने दी आपको? Sir, ये शिक्षा I got from a sir brigadier. अब आप देखिए, let me not comment on him, but this kind of information is something like Godi media. Yes, sir. In fact, I also felt like that, but at the first time, sir, I didn't wanted to lose anything. So I said, okay, has been part of the process, so he must be saying right. So I did it. And second thing, I Himanshu, I do not blame you, because thing is that there are so many people when they listen to news and they listen on GTV and Aaj Tak and Arnab Goswami jumping madly at the some this thing, you know, Rahul Gandhi ने हिंदुस्तान की इमेज का बंटा ढार कर दिया। बस झूठ तो मोदी बोल रहा, उसने क्या बंटा ढार किया? Yes, sir. मोदी को बोलो कि झूठ मत बोले। उसने बोला कि भाई भगवान भी अगर सामने आ गए तो मोदी उनको भी शिक्षा दे देगा। तो doesn't Modi behave like that? So the one thing I would like to ask about the areas of weakness. So like presently, I didn't have any such weakness which would obstruct me in joining defense forces. Sir, my answer in such case, can I say that presently I don't have any such weakness? Himanshu, that would be incorrect. You see, all of us, at whatever stages of our life we are, we have weakness, which we need to overcome. Fine. So do identify them. Last 2 years that. Right. Anji. Bolo. Please go ahead, beta. That is very. I can't hear you. Your audio is problematic, Himanshu. What you can do, you can write down your point to Yogita madam. So I will clarify. So Yogita, just take his point. We can move to the next person, and I'll answer your question, Himanshu. Not to worry, huh? Parth, go ahead. Good evening, sir. Good evening, Parth. So my doubt is that the NDA on 3rd September, that will be my first attempt. And everyone, they say that one should follow this approach and, one should develop the OLQs. But no one really guides that how one should develop the OLQs. So, is that all you wanted to ask? Yes, sir. Basically, I want your guidance that how should understood. on developing the OLQs. You can go and read my answer to this question, elaborate answer on Quora. I have written about it. You can follow me on Quora. But to make things simple, firstly, you don't have to know a word about OLQs. You don't have to know anything about them. Not required at all. What you need is, you are going for NDA, no? Yes, sir. Yeah. So what you need to do is make yourself a competent student. Be clear about your academic concepts. Have good general awareness and good physical fitness. That is all that you would need to get selected. Right? Okay, sir. And when you get selected, then put on social media, or you can come as a volunteer to No Frills Academy, approach Yogita madam, and we'll put a short clip of yours कि ये जो सब आपने बातें सुनी थी, ये जो था बहकावा था, इसमें दम नहीं था कोई. Sure, sir. समझ गया? Yes, sir. बोलना कोई OLQ की जानकारी नहीं होने की जरूरत, ना उनकी डेफिनेशन पता होने की जरूरत, ना उनके डेवलपमेंट की जरूरत पता, वो सिलेक्शन सिस्टम अपने आप पता कर देगा. Yes, sir. Now things are pretty simple, na Parth? Yes, sir.
Actually, life is simple. We make it complicated. Yes, sir. Yeah. Himanshu. Sorry, sir, it was a network issue. हाँ अभी आ गई बात. हाँ बता तेरा क्या पॉइंट रह गया था. Area of weakness. हाँ तो देखिए क्या है, सबके पास कुछ ना कुछ होते हैं एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. आइडेंटिफाई दोज एंड वर्क टू इम्प्रूव अपॉन दो एंड अकॉर्डिंगली राइट इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन. और अगर जेन्युइनली आपको ये कष्ट है और कुछ सेल्फ डाउट्स है, देन इट विल मेक सेंस दैट यू जॉइन आवर गाइडेंस प्रोग्राम. आई विल आइडेंटिफाई एंड टेल यू कि भाई ये इम्प्रूवमेंट के एरियाज है, एंड देन वी विल मेक अ प्लान टू इम्प्रूव दोस. Yes, sir. ठीक है. Okay, sir. And then I will ask you to tell me my areas for improvement, and I will also make effort to improve those. Thank you, sir, for your guidance. ठीक है ना. क्विड प्रो को रहेगा फिर तेरा मेरा, समझ गया. Sir. क्विड प्रो कॉन्ट्रैक्ट होगा तेरा, तूने मेरी बतानी है, मैंने तेरे को बतानी है, दोनों करेंगे इम्प्रूव. Okay, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम. Thank you, sir. वेलकम. हाँ मनीष. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मेरा जो डाउट था वो रिगार्डिंग सेल्फ डिस्क्रिप्शन से था. जैसे कि सर आई एम पर्सन हु इज वेरी इंट्रोवर्ट. लाइक I usually don't go to the parties, birthday parties, and I usually enjoy being alone. And like one of my hobbies and interests is to write. I write poems, and sometimes I write on the issues. Sometimes I write about the nature and all. So I just don't like this. So is it showing that I don't have the quality of being a liveliness quality? Like it is one of the officer-like quality. So I'm in doubt whether should I work on it or not. देखो मनीष क्या है, there is nobody who is a complete introvert or nobody who is a complete extrovert. This is a continuum, you know, कि एक पे बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट और एक बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट है, तो all of us are lying somewhere in between, है ना? Yes, sir. Will that be correct or not? Yes, sir. You are absolutely right, because whenever वो है, I'm तो yeah, so your perception and the feedback you have received from whoever you speak to indicates कि आपका closer to introversion है rather than extrovert. Now this in service life will be a handicap. Let me explain. Let us say you are a company commander in Kashmir Valley and your company has got deployed and for operations. अब क्या है, आप इंट्रोवर्ट हैं जैसे आपने बताया, तो आप वहां पे एसपी, डीसी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के वो हैं, एप्पल ऑर्चर्ड वाले हैं, सैफरन ऑर्चर्ड वाले, द मेन इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनसे आप बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं. आप कहेंगे कि मुझे कुछ टाइम चाहिए खुलने के लिए. नो, तो आप जब तक खुलने की सोच रहे होंगे, इतने दिन में आपकी कंपनी का एम्बुश हो जाएगा. तो अगर जो था आपके बदले, अगर जो कंपनी कमांडर जो कि एक्सट्रोवर्ट होता, वो जाते ही इन सब फंक्शनरी से मिला होता, गांव बूढ़ा छूढ़ा से बातचीत की होती, and his communication network had got established, some kind of intelligence network would have got established, which is highly informal in so many ways. So that person would have prevented his company troops from getting ambushed. होता कि नहीं होता ऐसा मनीष? Yes, sir. You're right. Sir, तो actually, ये बेटा नहीं, अब आप मेरी बात तो सुनिए. तो ये जॉब की रिक्वायरमेंट है कि एक्सट्रोवर्जन लेवल अगर थोड़ा हायर हो तो इट इज बेटर. ठीक. नाउ दैट यू रियलाइज कि ये एक जॉब रिक्वायरमेंट है, एंड in any case, even if you don't join the defense forces, the approach of being able to communicate with people is good for social as well as professional growth. Yes, is it so or not? Yes, sir.
तो ये है, इसको आइडेंटिफाई करिए एंड वर्क टू इम्प्रूव। और आपको इश्यू लग रहा है तो हमारा प्रोग्राम इज वेल सूटेड टू हेल्प यू इम्प्रूव इन दीज एस्पेक्ट्स। आप आ जाइए, ज्वाइन अप एंड you will just sincerely group activities में हिस्सा लीजिए, तो this aspect will slowly go on improving. Can't suddenly change, but gradually improve हो जाएगा. Yes, sir. And my second question was about the tag pictures, because I have read you when I was when I was preparing for NDA, and at that time I read that don't practice for the tag pictures. Just write what is your. I also advocate that this practice is not required now. Yes, sir. So because right now I'm pursuing engineering in agriculture sector. So whatever I'm seeing right now, because I am the person who is very interested in the degree and interested in the subjects, and also I'm from the farming background. So I have seen the problems, and I have read it in the degree programs. Whatever I perceive, the first thing about the problems and solutions that are very specific to the agriculture and those sectors. So are they, sometimes I think that, are they like monotonic in nature? So is it the right thing, or shall I will a little bit confused? देखिए मनीष, क्या है, आपका बैकग्राउंड जो भी हो, उसको पिक्चर्स की स्टोरी जो लिखते हैं उसमें घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेवकूफी का आइडिया है। आप मान लीजिए आपको पिक्चर में दिखाया गया कि पूरी बर्फ है और वहां पे एक इग्लू है, उसके बाहर जो है सील पकड़ते हुए दिखाई है एक फैमिली। तो आप स्टोरी उसमें अपने जो बैकग्राउंड है वहां की घुसेड़ सकते हो। Yes, sir. Not in that उसी case, के बारे sir, में but, लिखोगे ना आप, आइसलैंड के बारे में लिखोगे ना कहानी फिर। yes, sir. Yes. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आपका बैकग्राउंड जो मर्जी रहा हो, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूं तो मैं इन्फेंट्री घुसाऊंगा उसमें अपनी जो देखूंगा तस्वीर, नहीं ना। Yes. अगर फुटबॉल का मैच हो रहा तो फुटबॉल की मैच की बात करूंगा ना। Yes, sir. समझ गए? दैट इज व्हाट यू शुड डू। Allow the picture to tell you the story. Don't go with preconceived notion. This is what the coaching people do, and that is why they get identified. I have written about it. I think मेरे वेबसाइट में होगा या इंस्टाग्राम वगैरह में कहीं आपको मिल जाएंगी ये चीजें। Yes. Yeah. Got it? Yes, sir. Yes. Okay. Take care. God bless. Yeah, Rakesh will be the last question we'll take. Somebody I read question पूछा है, should I read newspaper every day? Yeah, it will be good to read newspaper every day. It's a good thing. Focus on reading the editorials and understanding the things well, because news analysis is more important than just getting the headline. So currently I'm preparing for NDA written exam. So should I start preparing for SSB from now only? See, there is nothing like SSB preparation. Preparation is to become more competent in life. That is all what you should do. So you are asking, thank you so much for this guidance program. Okay, you are most welcome, beta. I volunteered this, and if ये बात बन जाती तो it will be so no. That would be the genuine reward I'll get. Newspaper every day हो गया। I've been to SSB 5 times, but God functions out every time. बच्चे तुम ऐसा करो भाई, तुम मेरे पास आ जाओ। I will identify and tell you कि भाई ये improvement areas हैं, and we'll make a plan to improve upon those. And if you are sincere and you work systematically, then things should work out in your favor. I think that should be all the questions to be taken today. Yogita? Yes, sir. Rakesh has joined in, but I guess he has asked. Okay, he's already asked the question. Fine, then okay, all of you, thanks a lot. Take care. God bless for the questions and having the patience to listen to the answers. God bless. Good luck. Bye-bye. Thank you, sir.
somebody is Sir, asking next short term और long term का क्या difference है? Short term, long term का difference इतना ही है कि जो है I advise somebody who has serious problems with English or physical fitness, then he or she should take our long-term guidance program. Otherwise, short-term guidance program is good enough. हम date नहीं गिनते हैं. We are there to guide you till you attend your SSB, and even there कि क्या हुआ, क्यों बात नहीं बनी, so that we can draw out a strategy for next SSB. Fine. That is okay. Take care, all of you. Bye bye. God bless.